हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू वन सिंपल फैक्ट दैट यू शुड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर फोटोग्राफी असाइनमेंट्स। आपको ये सारे असाइनमेंट्स फ्री में करने चाहिए। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू 5 टॉप रीजंस जो मेरे हिसाब से आर समवेयर ऑन द टॉप, जो आपको एक्चुअली एक कन्विंसिंग रीजन देते हैं कि आपको क्यों फ्री में फोटोग्राफी करनी चाहिए। मैं ये जानता हूं कि काफी सारे लोग, काफी सारे वीडियोस आपको ये चीज बोलते हैं कि आपको कभी भी फ्री में फोटोज नहीं खींचने चाहिए या फिर किसी भी आर्टिस्ट को फ्री में काम नहीं करना चाहिए। आई टोटली समवेयर अग्री टू दैट, पर ये जो 5 रीजन है ये आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 रीजन आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद आप एक कैटेगरी में आए, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉसिबल थिंग्स कि आपको क्यों फ्री में फोटोग्राफी करनी चाहिए। और इफ इन केस यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन Instagram, दिस इज माई हैंडल, go and follow me because you are missing a lot of amazing stuff. Or just let me know in the comment section below on how exactly my new look is like, because I'm thinking to keep this for some time for few reasons. और उसके बाद में let's see what you guys actually think, so you can let me know in the comment section below. Or just in case you guys are not subscribed and if in case you are liking all the videos which I've been doing, please make sure that you are hitting that red subscribe button. And without wasting much time, let's just quickly start the video. पहला reason which is very important is you need to prove yourself in the market. अभी देखो, सीधी सी बात यह है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का मार्केट इट्स ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। अब ऐसा नहीं है सैचुरेशन का मतलब कि आप अगर नए फोटोग्राफर हैं, अगर आप आज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ इन द मार्केट और यू नीड टू शो पीपल द काइंड ऑफ फोटोज यू कैन टेक, ताकि उन्हीं फोटोज को देखते हुए आपको बाकी लोग आगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कॉन्टैक्ट कर पाए। सो फॉर दैट यू नीड टू टेक, यू माइट नीड टू डू सम फ्री शूट्स। अगर आप लकी होंगे तो हो सकता है आपका पहला शूट ही आपको पेड आ जाएगा, पर वहां पर रिस्क ज्यादा होगा। अगर आपने इधर उधर चीजें गलती करी तो यू माइट हैव टू पे अ लॉट फॉर दैट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट हाँ इन टर्म्स ऑफ योर बैड इमेज। स्टार्ट होने के पहले आपकी दुकान बंद हो जाएगी, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। और हो सकता है तो आप मे बी से अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन मे बी शूट सम फ्रेंड्स वेडिंग फॉर फ्री, सो दैट यू कैन गेट सम इमेजेस विच यू कैन एक्चुअली यूज ऑन योर फोटोग्राफी पेज या फिर वेबसाइट, एंड यू कैन शो पीपल व्हाट एग्जैक्टली इज द काइंड ऑफ वर्क विच यू हैव, एंड यू कैन शो पीपल सो दैट यू कैन गेट मोर वर्क इन द फ्यूचर. दूसरा रीजन विच इज समथिंग वेरी कन्विंसिंग इज मे बी सेफ इन केस यू हैव एनी पर्सनल प्रोजेक्ट इन योर माइंड. मान लीजिए कोई ऐसा शूट है, ऐसा पोर्ट्रेट शूट है जिसके लिए आपको किसी मॉडल की या नॉन मॉडल की जरूरत है जो आपके लिए सिर्फ आए, पोस्ट करे एंड रिटर्न टू दैट यू कैन जस्ट गिव हर सम फोटोज और गिव हिम सम फोटोज और बाकी आपका काम फ्री में हो जाए. देन इन दोज केसेस यू माइट हैव टू वर्क फॉर फ्री. बट अगेन अगर आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फोटोग्राफर हैं तो हो सकता है आपके पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी आपको कुछ स्पॉन्सर्ड चीजें मिल जाए. मान लीजिए कोई ब्रांड है जो आपको बैक कर रहा है तो वहां से आपको पैसा आ जाएगा. बट इनिशियली यू माइट हैव टू वर्क फॉर फ्री इफ इन केस यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग व्हिच यू रियली वांट टू वर्क पर्सनली. तो थिंक अबाउट इट. इफ इन केस इट इज नीडेड यू हैव टू डू इट फॉर फ्री. Number 3, to try something new. Now this is again something which even established photographers might have to do. अब होता क्या है, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर. इफ इन केस आई हैव टू ट्राई समथिंग लाइक मे बी से कैप्चरिंग द EDM इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स, या फिर मान लीजिए ट्रैवल फोटोग्राफी, या फिर मान लीजिए फूड फोटोग्राफी. नाउ फॉर दिस आई नीड टू प्रूव व्हाट एग्जैक्टली इज द काइंड ऑफ वर्क व्हिच आई एम एक्चुअली डूइंग और आई एम एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग. Wedding photography is different, food photography is different. So you will have to again prove yourself to the client. So for that, if in case you want to try something new, you will have to do few things for free. Now number 4, which is again somewhere I can actually personally relate to, वेडिंग फोटोग्राफर्स. अब होता क्या है, वेडिंग फोटोग्राफी में आपके सीजन्स होते हैं. कुछ महीने ऐसे होते हैं जब शादियां नहीं होती है. तो इन योर फ्री टाइम इफ इन केस यू आर रियली नॉट द काइंड ऑफ पर्सन विच आई एम, मुझे नॉर्मली फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है. तो इफ इन केस आई एम फ्री फॉर द एंटायर मंथ, आई वुड एक्चुअली वांट टू डू समथिंग just to make sure that I'm using that time. So if in case you want to maybe say try anything in your free time, just experimenting with things, you might have to do all those experiments for free. It might not be paying you anything. And number 5, which is last and not the least, is if in case you genuinely want to help someone, maybe say for example, if in case I have a friend, or if in case I know someone, if in case I have got a reference for someone from someone, then
मे बी से कोई मान लीजिए कोई मेल मॉडल है या फीमेल मॉडल है हु इज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इनटू मॉडलिंग, उसके लिए उनको पोर्ट्रेट्स की जरूरत है. शी इज योर वेरी गुड फ्रेंड एंड यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प हर, then you might have to do all that for free, क्योंकि यार if in case she is not doing good, if she is not having money to pay you, of course you will have to help her genuinely. So these are top 5 reasons why I feel you should be doing photography for free. You should not charge anything at all, only barters, I would say. Not even barters, it is absolutely free. It's like giving favors, it's like donation. So if in case you guys can relate to any of these 5 things, if in case you have done any of these 5 reasons free shoot, let me know in the comment section below. So that's it in this video. I'll see you again in the next video. Let me know how this video is and let me know how my new look is. Call me Ganja in the comment section below. That will be like super awesome. But yeah, it's cool. So yeah, I'll see you again in the next video. Till then, have a great time and please like the video, share the video, comment and let me know whatever you would want to know or whatever you would want to ask. And last not the least, hit that subscribe button before you leave. So I'll see you again in the next one. Till then, take care.